चलिए क्लास शुरू करते हैं नमोकार महामंत्र से। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोवे सौवसाहुणम। एषो पञ्चडमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणञ्च सौवेसिं पदमं हवै मंगलम। और हम लोग छह ढाला ले रहे हैं तो उसका भी मंगलाचरण कर देते हैं। आई विल शेयर माई स्क्रीन तो आप सबके लिए इजी हो जाएगा। सुनील जी, इन द मीन टाइम कैन आई आस्क, सैटरडे जो छह डालर का क्लास स्टार्ट हुआ है वो आप टीच कर रहे हैं या कोई और टीच कर रहा है? सैटरडे को जो क्लास शुरू हुआ है ना वो और कर रहा है, क्योंकि वो लेवल 1 जो लेवल 3 के लिए है, तो वो और कोई जो पूजा जी है इंडिया से वो ले ओके, रही है। ओके। और उसमें हमने जो लेवल 1 में पढ़ा था ना, हाँ। हाँ, तो वही क्लास उसमें लिया जाएगा, लेवल 1 या वाला। वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली स्टार्टेड दैट क्लास, सो दैट्स हम्म। व्हाई आई वांटेड टू चेक। हाँ, तो वो वही। तो एक उस टाइम पे है और एक थर्सडे नाइट को भी है। तो थर्सडे शाम को 7 बजे यहाँ पे, फिर सैटरडे को। सो वो जो दो क्लासेस है, दैट वन फॉर दोस्त ढाल 1। ओके, और ये ढाल 2। सो ये एडवांस लेवल की क्लास अपनी रहेगी। ओके। ठीक है, और अगर आपके फ्रेंड्स दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं सो दे कैन ज्वाइन इवन दिस क्लास टू। ओके। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आप वही पहले ज्वाइन करो और उसके बाद ये करो, इट इज नॉट। दे कैन ज्वाइन एज मेनी, नो वरीज। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए हम इसका भी मंगलाचरण पढ़ते हैं। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग संहारी के। राइट, सो ये छह ढाला है। तो वी हैव ओनली गॉन थ्रू द हिस्ट्री। अर्नव, do you know what do you meaning by the छह ढाला? It's about the sufferings. It's sufferings and how to handle them. It, What to suppress and what to handle them. like what's the sufferings you'll find in every single gati, and then Mm-hmm. it's practically telling you what happens in every gati and why you Mm-hmm. go to monks. It's like Okay, very good. So at least you know that the subject we have covered in Dhal 1, right? And yes, this is our first class. So however, I'm planning to do it this class and the next class. I'll try to again uh, cover up Dhal 1. So it will be like an high level overview. So at least now we will have a link, and then we can start from the follow. I mean, not next week, but the following week we'll start from the Dhal 2. Okay, so this will be a planning. So let's will be going about what is this, the Chetala. Ha. So Chetala has Che means a 6, right? It is a simple uh, digit. It's called Che means a 6. And they have a Dhaal. Dhaal means in an older time, whenever those the people are going on a war, they have their shield. They have their weapon and a shield to protect themselves. So a Dhaal actually means the shield. Okay, so there says here one, I am giving you a way on a 6 ways that will be protect you.
Okay. So Nikita, can you please turn on your video? I can't hear you. Oh, my voice is audible, pretty audible to everyone. Yes, you're audible. I can hear Arnav? you. Okay, so Arnav, are you able to listen my voice, or Yeah, no, I do you still have a problem, Arnav? no, Arnav, you're mute. no. It was just no, not anymore. Not anymore, right? Okay. So Nikita, we have starting with this the Chhah dhala, right? So, however, in our Jain scriptures, it's been written uh, in a two ways, and we can easily call it. These are the two kind of the genre. Okay, one is called Agam, and another one is called Adhyatma. So, do you know what is the Agam? Any one of you? What is the Agam? अगम शेयर्ड नॉलेज, जो नॉलेज हमें शेयर हुई है विद, जो लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। हाँ, वेरी गुड। तो उसमें क्या क्या आता है? उसी में पूरा अपना ये जिनवानी में जो भी तत्व सूत्र और जो जितना भी लिखा हुआ है शास्त्रों में, हम्म जितने भी शास्त्र हैं हमारे हम्म हाँ, सही है, सही है। आप सही जा रहे हो। विभिन्न। हाँ, हाँ, तो आगम इट इज लाइक एन दैट वो आगम का मतलब है आगे से चली आई, ऐसा। ओके, गमन मीन्स चलना। हाँ, सो दिस आर द सम संस्कृत वर्ड। सो कैसे चली आई है कि जो आगे से चली आई है, परंपरा से चली आई हमारे पास। सो इट्स कॉल्ड मीन्स दिस वन इज जस्ट द मीनिंग ऑफ दैट द वर्ड, बट एक्चुअली आगम इट इज वी गॉट दिस द जिनवाणी फ्रॉम तीर्थंकर भगवान, राइट? In a Tirthankar दिव्य ध्वनि। Bhagwan, yeah, in their Divya Dvani, or we can in English they're called sermon. So into that one, they teaches us everything. Okay, and whatever they teach us, and even though it is not means the Tirthankar Bhagwan has covered all their subject is, yes, they cover those the subject is related with this the whoever it is in a Samavasaran, and if they have any doubts or any questions, and that will be usually comes up there. But in a Samavasaran, we have a Gandhar Bhagwan, right? So Nikita, do you know Mahavir Bhagwan has how many Gandhar? How many Gandhar? And just name any one of that one. Mahavir Bhagwan. Come on, we are celebrating Mahavir Janma Kalyanak, Mahavir Jayanti, right? We do all those the program. मैं Even we बताऊं, celebrate Diwali. Okay. Now, do you know how मैं many बत, Gandhars Mahavir Bhagwan has? He had one. No, 11. Like, 11 Gandhars are there. But very famous one, गौतम गणधर। Gautam Gandhar. हाँ, हम्म, उन्हीं की पूजा होती है दिवाली हाँ, वाली उन्हीं की दिन, होती है। लास्ट में। तो सही है। और सारे गणधर होते नॉलेज वाइज ऑल आर इक्वल। ओके, नॉलेज में किसी के पास कम नॉलेज है या किसी के पास ज्यादा नॉलेज है, ऐसा नहीं होता। नॉलेज वाइज all gandhars are as equal positions. So, and they have a special power. Okay, so what is their special power? Whenever they will first time heard omkar dhvani. Okay, because tirthankar bhagwan, they are not saying however our speeches, right? We are talking up in a sentence, and that means we have a words and everything, but actually in divya dhvani it's just a ekakshari. Ek means one, akshar, akshar means only one alphabet it has. It's om.
Okay, so it is just the one. Every time if you are in an Samava Saranji, you heard only one sound over there. Om, Om. But it is the main sound. But actually, what you hear, right? You hear entire subjects and sermons and everything, it will be there. Okay, so if they are talking about the Tattvar Sutra, everyone is listening that the Tattvar Sutra into their own languages. Mhm. So, for an example, Nikita only knows English, then the entire sermon will be, she can listen on her own ear, it's in English. While Rishabh very comfortable with the Hindi, then the entire sermon is listened by the Rishabh in Hindi. Mhm. So that one, it is being translate means yes, everyone listening into their own languages, right? So over there, it is been says 18 18 Mahabhasha. So those are the 18 main languages and 700 sub languages. Okay, उतनी languages के अंदर it will be translated immediately. That the single word Om. And as soon as Gandhar Bhagwant heard this Omkar Dhwani very first time, and they got with because they have a special power, it automatically they created 12 ang and 14 purvas. So 12 ang and 14 purvas. They created entire that the knowledge within an 48 minute. एक अंतर मुहूर्त के अंदर 12 अंक और 14 पूर्व की रचना हो जाती है. So, and what is that knowledge? How big it is, right? If we just want to consider, and that knowledge is that much big that our human mind has a capacity to hold. ठीक है, इतना बड़ा नॉलेज है, उससे ज्यादा हमारे ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी नहीं है उसको होल्ड करना, याद रखना. Okay, so it's like a maximum capacity, that's only that much it has. So what it covers, it covers all science right now, whatever the science you are uh, learning. So it covers all science, medicine, mathematics, astronomy, right? And then after you can sub part of those, the geology, geometry, everything, all those the subject covers. It is not only that much limited only to that one, because that is you find to particular in your earth, right? But in a universe, you are not alone. So there are also other beings also living with you. So they covered all those the knowledge about their one. So it covers all our three realms. जो पूरा हम तीन लोक है ना उसका भी वो कवर करता है. Then after it covers the six dravyas, because you know that, right? We have a six substance in the universe one. Okay, it covers karma and how what are the rules of that one, how those are. It covers everything. Means now nothing is been left. उस नॉलेज में उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता. नहीं, क्या उतना ही होता है नॉलेज? नहीं, जो हम एज ए ह्यूमन we can consume, right? And we can utilize. Consider according to the humans ones, because those are the scripture is written for whom? For human, not for dev. नारकी को तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाता है, राइट? और तिरियंज के लिए उतना नॉलेज जरूरी नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच कैपेसिटी. सो एक ही लोग बचते हैं, एंड दैट इज अस. सो आगम इज अ बेस, but 99% of that one is considered that the knowledge
that is we are just using and it's been applied for everyone. Hmm? So, and then that's why we have another genre, or we can call it Adhyatma. So what is the Adhyatma, right? And why this one is been developed? Hmm? तो simple है, जैसे you might have seen all those the recipes on YouTube, right? If you want to make a samosa, what you do? You just go on YouTube and type it out, okay? How to make a samosa, and you will find 10 recipes or 15 recipes or whatever it will be. और उसमें क्या होता है अर्नव? Instruction on how to make it in its So exact. they are making in front of you, right? In a Mhm. YouTube videos you are watching it. Mhm. तो वो स्मेल भी लेता है स्पाइसेस की, बोलता है कि वाह बढ़िया स्मेल है. आपको स्मेल आई? हाँ या ना? No. No, right? And then after once they finish it, they test it और बोलेंगे कि वाह सो डिलीशियस डेलिकेट. आपको टेस्ट आया? No. नो. ओके. हाँ, तो आगम के अंदर बस वही था. हम्म, पर उसमें मुझे टेस्ट नहीं मिल रहा था, राइट? और मुझे तो उतना सब कुछ जान के क्या करना है? If you are interested in being an engineer, then what is the use of all those the medicine knowledge to you? Correct? तो सबको क्या पसंद है? What everyone likes? बताओ. उसको तो सिर्फ अपने बारे में ही पसंद होता है सब कुछ. मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये खाता हूँ मैं, ये नहीं खाता. हम्म, ऐसे रहता हूँ, ऐसे जीता हूँ, ये मेरे फ्रेंड है. Every time they are talk about what? For themselves, right? Hmm? Or that is true because you are a center of universe. Correct? जैसे निकिता, which house you care most about? Your own home or house or your neighbor one? My house. Your house, right? Right. If somebody's try to that spoil your one and try to that throw some trashes in your yard or in your home, and then what was your reaction? You get angry, correct? And वही का वही अपने पड़ोस के हाउस में कोई कर रहा हो तो Don't care. you don't care. Very good. Hmm? So these things is happening. So that's why that another genre is been developed. It's called Adhyatma. But that one is a very small portion, very small portion. Okay. So what do you mean by Adhyatma? Adhi means going towards the more way. और आत्मा को तो हमें पता ही है. What do you mean by आत्मा, ऋषभ? ओके, सोल. निकिता, आत्मा का मतलब क्या होता है? Your inner self. योर इनर सोल. ओके. अर्नव, आत्मा का मतलब क्या होता है? Soul. सोल. ओके. माता जी, आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा मतलब वो जो जीव जो मैं हूँ, जीव। हाँ. सो हम कहते हैं जिसे, मतलब जो मैं हूँ वो ही आत्मा है, जीव। हम्म. अच्छा, पूर्वी जी आप बताओ, आत्मा का मतलब क्या होता है? सेम, सोल, जीव, सेम चीज. सेम चीज. आत्मा का मतलब मैं, आई. आत्मा संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब होता है कि मैं, आई एम. इंग्लिश में जो लिखते हैं ना, आई एम, मैं, आई. तो हम जब कभी भी आत्मा सुने
तो आत्मा is soul is look like a third party. It is not a third party. It is myself. I am. Right? लिखा तो ऐसे ही जाएगा कि अर्णव ने ये किया. अर्णव अगर पढ़ेगा, ओके, जैसे लिखा ये जाएगा कि अर्णव did homework. Arnav, whenever you are reading that one, then how you going to read it? Arnav did homework like a third party, or I did a homework, I did my homework. right? So whenever it is in a writing style, it is same way, because writing style they will write it down. Okay, Arnav did homework. But whenever you read it, so reading and interpretations is entirely different. Wherever those the Atma will come, okay, it's a soul. Yes, we can. It's like a word, but ultimately the Atma is who I am. हम्म? जब भी कभी भी नाउ इन अध्यात्म में जब भी आप आत्मा पढ़ो, तो उसका मतलब क्या होगा? मैं. राइट निकिता? आई एम. राइट, आई एम. मैं. आत्मा मीन्स मैं. तो अधि अधि यानी कि उसकी तरफ. किसकी तरफ लेके जा रहा है? आत्मा की तरफ ले जाने वाला, अपनी ओर ले जाने वाला। मेरी अपनी ओर ले तरफ। जाना, मेरी तरफ. ठीक है. सो जो कुछ भी मेरी तरफ ले जाने वाला है, मुझसे रिलेटेड है, मेरी ही बातें करता है. ऐसी पूरी जो जनरल लिखी गई ना, उसको बोलते हैं अध्यात्म, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात है. ओके. तो अब उसमें और आगम में डिफरेंस क्या है? जैसे आगम में बोलेंगे कि इंसान, जानवर इस दुनिया में रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, और जानवर यानी कि एनिमल्स भी रहते हैं, राइट? ह्यूमन. और आध्यात्म में भी बोलेंगे कि ह्यूमन, लेकिन आध्यात्म में ह्यूमन का मतलब कौन होगा? मैं होगा. और आगम की में ह्यूमन का मतलब कौन होगा? कि पूरी ह्यूमन रेस रहेगी. ठीक है. उसमें मेरी इंडिविजुअल बात होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी. You understand, right? Or no? I am now making a difference. What is the difference? Because agam is written in a very generic way. It's written in a way that it applies to everyone. लेकिन जैसे I'll give you an example कि आपको अगर पेट में दुख रहा हो और निकिता को पेट में दुख रहा हो, ओके, तो दोनों का पेट में दुखने का रीजन सेम हो सकता है क्या? निकिता आप बताओ. Maybe or maybe not. हाँ, maybe or maybe not. You are right, right? So it means that the same kind of the medicine will apply to you both one? No, right? It is according to your reason, they will give you that kind of the medicine. And according to Arnav's reason, they will give you that kind of the medicines, right? Correct? But whenever we are talking about a book of medicine, उसमें क्या होगा? जेनरिक सारे मेडिसिन होंगे. सारे मेडिसिन होंगे. वेरी गुड. ठीक है. तो उसमें आगम में सब कुछ है, और अध्यात्म में क्या होगा? टेलर्ड होगा, राइट? वॉट एवर इट इज बीन applicable to me according to my symptoms is that will be written up here one in adhyatma, right? क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अध्यात्म? नाउ आई विल स्टार्ट विथ ऋषभ. ऋषभ, पूरी कहानी मैंने बता दी. अब मैं समझना चाहता हूँ कि आपको क्या पता चला, अध्यात्म का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और क्या होना चाहिए. I forgot the definition of Do not worry about the definition one, right? You are concentrating right now. I am just explaining what is the agam, what is the adhyatma.
करेक्ट? अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर माई कॉन्वर्सेशन इज गोइंग अप हियर वन, what would be the objective of अध्यात्म? उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? Objective, like what it does. Yes. It acts as shields. ओके, निकिता आप बताओ. To know yourself. To know yourself. Very good. Okay, अर्णव आप बताओ. It's Adhyatma is about you. So yeah, it is about, ultimately it's about you, but then what would be, what do you want to get it out from that one? Can you be a little bit more specific? या क्यों तुम्हें, ओके, उसमें अध्यात्म तुम्हें क्यों चाहिए? क्या उससे तुम्हें क्या मिलेगा? It's knowledge about yourself. It's knowledge about yourself. ओके, उसके अलावा मिलेगा क्या? तुमने जान लिया कि तुम अर्णव हो, लेकिन उसके बाद क्या मिलना चाहिए? It'll give you like the knowledge about your soul, like who you are truly, and you can use that for like moksha or something. Like ओके, वेरी गुड. माता जी आप बताओ. अपने आप को जानना और फिर उस पे वर्क करना, अपनी मतलब जो कमियों को हटा के, और अपने आप को मतलब अपने आप पे वर्क करना एक्चुअल में, कि हमारी जो कमियां हैं उनको दूर करके धीरे धीरे हम भी मोक्ष की तरफ जाएंगे. तो मेनली वही, वेरी अपनी गुड. इम्प्योरिटी को हटाना. अच्छा पूर्वी जी आप बताओ. अध्यात्म मीन्स अपनी सोल में घुस जाना, टू फोकस मोर एंड मोर ऑन द एक्चुअल सोल एंड देन वर्क ऑन द ग्रोथ ऑफ योर सोल, लाइक सेल्फ ग्रोथ. अच्छा, मैं सच में जो आंसर ढूंढ रहा था ना, मुझे नहीं मिला. पता है, ये पूरी एक्सरसाइज का मतलब एक ही है कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे सुख चाहिए. सिर्फ नॉलेज से मेरा पेट नहीं भरता. मैंने आपको समोसा कैसे बनता है ये सिखा दिया या दिखा दिया, उससे आपका पेट भर जाएगा? तो पेट कैसे भरेगा? हाँ निकिता बताओ. When you actually eat it. When you actually eat it. Very good. Okay, so if you know yourself, that's it, done? No. When you get in happiness, right? Why we want to go to moksha? हमें मोक्ष क्यों चाहिए? Because we want to be a happiest person in the world. पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा, उतने हमें खुशी चाहिए. Yes or no? how are you always happy in moksha? How you always happy in a moksha? That is really good question. Okay, so मोक्ष के बारे में एक सीक्रेट बताऊंगा तुम्हें. क्योंकि पता है, जैसे ही मोक्ष होता है ना, उससे पहले 14वां गुणस्थान आता है. वहां पे जाके हमारे पास अब टोटल 8 तरह की शक्तियां जो है ना, वो टोटल एंटायरली फुल हो जाती है. इट्स टू देयर ऑन फुल पोटेंशियल. ओके, और उसमें एक अनंत सुख है, अव्यापात. सो सुख इज अवर वर्च्यू. ओके, वो हमारा गुण है. जैसे ज्ञान हमारा गुण है, तो जैसे ही केवल ज्ञान होगा तो ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा. अब उस ज्ञान में अब कुछ भी अब छुपा नहीं है. नथिंग इज हाइड फ्रॉम दैट नॉलेज, राइट? लेकिन सुख अभी उसके फुल पोटेंशियल पे नहीं है, 99.9 पे अटका हुआ है. ओके, और जैसे ही 14वां आएगा, लेकिन वो वेरी, इट्स लाइक एन, जो मोमेंट होती है ना, इट इज इवन फ्रिक्शन ऑफ दैट द सेकंड. मैक्सिमम 3 समय लगते हैं, मैक्सिमम थ्री समय.
पर उसमें जितने सारे अपने हैं ना वो सारे 100% फुल पोटेंशियल्स पे आ जाते हैं। तो अपने में सुख नाम का एक गुण है, वो भी अपने फुल पोटेंशियल्स पे आ जाएगा, यानी कि हमें 100% सुख मिलेगा, 100% हैप्पीनेस मिलेगी। ओके। और पता है केवल ज्ञान में क्या क्या झलकता है? बिकॉज यू आस्क एंड आई एम लिटिल बिट diverting towards that subject one. केवल ज्ञान में क्या क्या means what is been reflected in केवल ज्ञान, do you know? I- Infinite knowledge, like Not in only knowledge one. ओके। in- उसमें दुनिया की सबसे अच्छी से अच्छी चीज से लेके बुरी से बुरी चीज भी झलकती है। ओके। उसमें जितने भी स्लॉटर हाउसेस है ना, उसमें जितने एनिमल स्लॉटर हो रहे हैं ना वो भी झलकते हैं। जितने लोग दुनिया में जितने पाप कर रहे हैं ना वो भी झलकता है। ओके। और उतना ही नहीं, जो नारकी और जितने भी एनिमल्स है ना और जितने भी जीव है, वो जितना उसको दुख हो रहा है ना वो भी झलकता है। यस निकिता। How can you be happy then? यस वो झलकता है, क्योंकि उसमें वो दे कैन नॉट फील देयर, दे नो इट। Okay, I'll give you an example, and that's why it's become a much more easier for you, right? Because that the feeling it is, that is what I says. Whatever our virtues are, all are independent one, and they are working independently. Okay, जैसे I'll give an example. आपकी जो आंख है, your eyes, right? What is its function? हाँ, You see? just see, right? वो सुन सकती है क्या? नहीं। ओके, वो क्या टेस्ट कर सकती है क्या? नहीं, राइट। हम्म। और आपके कान क्या करते हैं? व्हाट योर ears डू? बताओ, टेल मी। सुनते हैं, they listen. दे लिसन इट, राइट? सो इट मीन्स Yes. दैट इंडिविजुअल आवर थिंग्स हैज देयर ओन वर्क। तो ऐसे ही हमारे में जितने सारे वर्च्यूज है ना, दे हैव देयर ओन फंक्शन, एंड दे आर जस्ट डूइंग देयर ओन फंक्शंस ओनली। दे आर नॉट डूइंग अदर पीपल्स फंक्शन वन। सो ज्ञान ने नॉलेज कर लिया। तो उसका पता चल गया, ओके, कि भी इसमें इसको कितना दुख है, क्या है, ये है। लेकिन दुखी होना ये सुख जो अपना गुण है ना उसकी विकारी पर्याय है। दुख किसकी विकारी पर्याय है? विकारी यानी कि ऑपोजिट, वो अपने आप को ही अपने में ही वो डाइवर्जन क्रिएट करता है सुख गुण की। ओके। तो अब इसमें सुख कौन सा हुआ? 100% पोटेंशियल पे, पूरा फुल पॉजिटिव पे 100% पोटेंशियल पे आया है, इसलिए उसको दुख नहीं होता। समझ रहे हो निकिता? हम्म। I will make you an example in a very in a really way that way you can understand. जैसे आपकी मम्मी को बुखार आया, हम्म, और आपको भी पहले बुखार आ चुका था, you also get a sick previously, and the same kind of that the fever your mom has done, right? So do you know the pain about that fever, right? You know that because you already experienced it previously, so you know that the how much is a painful that the fever one. But right now your mom has a fever, you understand that she has a fever, but do you feel their fever? Do you feel that pain? No. Very good. So same way they understand how much that the other Jews are in a misery, what kind of those the that the pain they have passed through, but they cannot feel it because जो सुख नाम का गुण है ना वो पॉजिटिव पे अपने पोटेंशियल पे काम कर रहा है।
ओके, समझ में आया और स्टिल हैव अ डाउट? Very good. Lekin I like your questions because you means, yeah, this is good. You, whenever you are listening, you also think about it as well. So this is good. Pucho. Okay. So now we already know. So usme bhi in Adhyatma, we also talk about eight karma, 8 karmas, right? We talk about our universe, Jain universe. 3 लोग बताएंगे कि स्वर्ग, नर्क, ये सब कुछ. लेकिन उसका मतलब क्या होगा? Rishabh, now it is easy for you, right? This question is very easy. In Adhyatma, right? In Adhyatma, we also talking about, because we have the same terminology. Terminology is not a different one. Only interpretations is a different. उसमें भी हम सारे कर्म बताएंगे, उसमें भी हम ये तीनों लोक बताएंगे, उसमें भी हम 4 गति बताएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? I don't get the question. Like the meaning of So right now we are talking about Adhyatma and Agaman, right? Because we are starting up Chhah dhala. So we need to decide it, okay, this Chhah dhala, it is belong to the which genre? हमें अगर बुक का जैसे आप म्यूजिक सुनते हो तो आपको पता होता है कि ये पॉप है, ये रॉक है. Okay, if you know about that genre one, that's where you can enjoying it, right? And sometimes if you want to tune your audio output, you can tune accordingly, so you can enjoy more. Correct? तो वैसे ही अभी हम 6 ढाला शुरू कर रहे हैं. And that is because I'm saying that first 2 classes are, it's like a very basic one. We covered up to the first chapter 1 in a Chhah dhala, and Chhah dhala has a 6 chapters. It's already right now you can see 6 adhyayas, right? So before that one, we need to understand where this book or this scripture is belong to. मैं सीधा सा ही बता दूंगा आंसर, ये नहीं चलेगा, because now onwards this is a class wherever you have to start analyzing it. Whenever you are reading it, any kind of those the book, immediately you will know, okay, yeah, this one is the suspense thriller, okay, this one is a romantic one, okay, or this one is a adventure story, right? In a library, are you taking those the books, and have you ever read any kind of those the books and stories and something, and you know that their genre, correct? And then after next time you will go, and if you more like or towards the romance ones, then what kind of the novels and everything you pick up? A romantic one, definitely according to that genre which will becomes, right? Correct? Even in the movies they have now all those the genre as well. You love action, yes, so these are the action movies. Okay, if you love a suspense thriller, these are the suspense thriller. If you love horror, these are the horror movies, correct? So whenever you'll start watching that the movie, and within a few minutes, you definitely decided, hey, okay, this movie is belongs to this genre. पता चल जाता है ना? तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें तो पता होना चाहिए कि हम कौन सा किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या क्या आएगा. समझ में आ रहा है? Because now you all are in advanced class. Okay, so in a advanced class, what do you mean by advanced class? एडवांस क्लास का मतलब क्या होता है? निकिता, आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस क्लास? एडवांस स्टडीज का मतलब क्या होता है? You go more in the depth of the subject. Yes, you know that they put it you in a way, then after later on you can easily decide it, correct? You need to think into that the subject one, you need to do your homework, you need to do research, correct, right? They will be working you as a guideline one, but the majority part you need to put it into it. So this one is the, and now from the chapter 2 and everything, and we already now we're already in an advanced class. So I am teaching you, whenever you are reading any kind of our Jain scripture, you should immediately need to identify, hey, okay, this belongs to the which genre.
ये किस में आएगा? ठीक है, जैसे हम 24 भगवान की स्तुति करेंगे वो किस में आएगी? वो अध्यात्म में आएगी। नहीं आएगी, वो वो आगम में आएगी, क्योंकि 24 भगवान का मुझसे कोई रिलेशन ही नहीं है। ओके, अच्छा मेरी, हाँ। अध्यात्म में वही चीजें आएगी जिसका मुझसे रिलेशन है, मेरा या मेरे से रिलेशन वाला। 24 भगवान का मुझसे क्या रिलेशन है? आगम में। समझ में आया? हम्म। निकिता, you are you getting it, understand it? So in a remember, in a adhyatma, which one is only related to me, हम्म, myself? Connections, is there supposed to has any kind of some sort of the connections with whom? With me. Okay. If it doesn't have any connections with me, and then if still it is in a Jain scripture one, then where it belongs to? आगम। Agam, right? Because over there, oh, everything will be a generic one. Okay, and whenever it comes to the adhyatmic one, it's tailored according to me. जैसे आप ड्रेस लेने जाते हो, तो आप कौन सी साइज का लेते हो? अपने साइज का। अपने साइज अपने का। साइज का, राइट? लेकिन स्टोर में सारे साइज सबके के। साइज का। राइट, बिकॉज स्टोर इज जेनेरिक। समझ में आया? ऋषभ, see, Yeah, if you miss this the basic one, in a future one you always been having a trouble and you always been in a doubt one. Okay, because there are the two kind of those the things and their interpretations method is also entirely different. Okay, that's why we want to understand. So if we are talking about, whenever we are talking about the adhyatma, सारे कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, because कर्म it is which one? निकिता, कर्म कौन सा द्रव्य है? which द्रव्य कर्म is? Damn, Adam. which substance the karma is? कार्मिक पार्टिकल्स कौन सा सब्सटेंस में आते हैं? उद्गल। उद्गल, वेरी गुड। एंड हु एम आई? जीव। आई एम, हु एम आई? Jane. जीव। जीव, राइट? सो आई एम डिफरेंट देन उद्गल वन, Badly. right? All right. So even though we are talking about here one the karma one, but whenever in interpretations times will come, we believe that okay, they cannot do anything inside me. Yeah, whenever something happening here one on that time, we showing you because our jiv is not, it's like an invisible thing, we cannot see it. हम्म क्यों नहीं देख सकते पता है? कौन मुझे रीजन बताएगा कि हम जीव को क्यों नहीं देख सकते? Because Mali Why we cannot see a soul? what? Jnanavali yantra. No, not ज्ञानावणी अंतराय। क्योंकि कौन बताएगा? ट्राई करो ऋषभ, ट्राई करो, हम जीव को क्यों नहीं देख सकते? जीव जीव को तो देख सकते हैं ना? नहीं देख सकते। क्यों नहीं, आत्मा नहीं को देख नहीं सकते? देख सकते, आत्मा को नहीं देख सकते क्योंकि हाँ, आत्मा को या जीव को भी नहीं देख सकते। आत्मा, आत्मा यानी कि मैं, मुझको भी हम, हाँ, एक हिसाब से बोलेंगे कि आध्यात्म में देखा जाता है लेकिन देखा नहीं जाता। ओके,
क्यों नहीं देख सकते? ओनली वी कैन फील ओनली, मतलब हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, क्योंकि जैसे क्यों? हम करंट नहीं देख सकते, जैसे लाइट में करंट हम नहीं देख सकते, बल्ब जलता है बट हम करंट नहीं देख, उसी तरह से ये एनर्जी भी हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते, वी कैन फील। ओके। हाँ पूरी जी बताइए, क्यों नहीं देख सकते? हमने कुछ क्लासेस पहले वी हैड स्टडीड दैट वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीव प्लस पुद्गल प्लस समथिंग एल्स। सो हम लोग अभी पुद्गल वगैरह सबका कॉम्बिनेशन है, वी आर सराउंडेड बाय पुद्गल, सो वी कैन नॉट सेपरेट द जीव आउट ऑफ इट. So we kind of coexist and we all we can see is the Pudgal part, but we like Dravya Gun Paryay, like we're a combination, no? Okay. नहीं नहीं। क्योंकि अ, सिंपल है, जीव में रूप नाम का गुण ही नहीं है। ओ पुद्गल में है रूप रस गंध वर्ण। जीव में रूप नाम का गुण ही नहीं है। जिसमें जो चीज नहीं है उसमें से वो चीज नहीं मिलेगी। राइट? जितने भी हम ओनली वी कैन सी, ओनली यू नो दैट व्हाट वी कैन सी, what we are able to see it, all pudgals. Other than the pudgals we cannot see anything. Not akash, not kal, okay, not dharma, not धर्म। adharma, and not जीव. right? Because रूप नाम का गुण उन किसी में पाया नहीं जाता, सिर्फ पुद्गल में ही पाया जाता है। वेरी बेसिक। ओके, राइट ऋषभ? हम्म। तो उससे क्या होगा पता था? बिकॉज यू नो दैट दैट्स why whenever those Acharya Bhagwan and Tirthankar Bhagwans they did it, they says if it was clearly visible to anyone, okay, hey, this is the white color, it look like a Jew, right? And then it will be easier for other people, right? But whatever it is invisible, then how you can show them? So that was a really great difficulties was there in front of them. And that's why that they put it all those, okay, whenever, because one things you cannot see but something you can see it, right? So they will just give that the directions, hey, यहाँ पे ये है तो उसके सामने ये है। समझ में आ रहा है? जैसे I will give another example. Whenever you will see there are the 1, 2, 3 year old kid, right? If you have your sibling 2, 3 year old one, and if you see an aeroplane going in a sky, and then you say, hey, see that the aeroplane, and he says where it is. Okay, so you can say, hey, see my finger, see on the same directions, and he's just looking at to your finger one. Will he able to see the aeroplane? तुम उसको फिंगर करके क्या दिखा रहे हो? अपनी फिंगर दिखा रहे हो कि एरोप्लेन दिखा रहे हो? दिखा क्या? रहे। एरोप्लेन दिखा रहे हैं, राइट? क्योंकि तुम एरोप्लेन को तो पकड़ नहीं सकते, तो तुम्हें दिखाना कैसे पड़ेगा? अपनी उंगली से ही दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो? हम्म। तो यहाँ पे कहा ये जाएगा, लेकिन हमें वहीं पे रुकना नहीं है, वही समझना नहीं है, बिकॉज इट इज अ लिमिटेशन। और आगम की लिमिटेशंस क्या है पता है? मेजर लिमिटेशंस इज बिकॉज आगम इज अ जेनेरिक, इट इज नॉट टेलर्ड अकॉर्डिंग टू माई नीड। ठीक है? जैसे अध्यात्म में किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा तुम्हें दिखाने के लिए, बिकॉज यू आर इनविजिबल। यू नेवर टेस्टेड योर सेल्फ इन अलोन। तुम्हें अपना टेस्ट अकेले का आया ही नहीं है। तुमने हमेशा लेमोनेड ही पिया है, कभी सिर्फ लेमन को टेस्ट नहीं किया है। और उसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि हाउ लेमन इज, बिकॉज लेमोनेड में लेमन अलग है, शुगर अलग है, वाटर अलग है।
ओके, और उन सब का टेस्ट अलग अलग है, ठीक है। फिर थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं, वो भी अलग है, राइट। लेकिन तुमने हर बार क्या पिया हुआ है? लेमोनेड ही पिया हुआ है। तो उस लेमोनेड से तुम्हें लेमन के टेस्ट की तरफ डायरेक्ट करना है उनको। You clear any doubt into those one up? There are the two genres, right? अब कभी भी any आप बुक उठा के पढ़ोगे ना, I think कि anyway we can go more over onto it, but I do not permit because otherwise this the class become much more lengthy. But it will be give you a high level overview, and now you can open any of our Jain agams or adhyatma or any Jain scriptures, and you will immediately identify these things is belong to which genre. हम्म, अध्यात्म में ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इटर्नल ब्लिस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस, राइट। बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांट। अगर उसमें ये लिखा है तो ये मेरा है, अगर उसमें ये नहीं लिखा है तो ये आगम है। ठीक है, ओके। तो नाउ क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन। छह डाला फॉलो इनटू विच ऑफ दोस जीनर? उसमें से किस स्ट्रीम में आएगा? छह ढाला हम पढ़ रहे हैं, राइट? सो छह ढाला बुक इज नाउ बिलोंग्स टू विच genre? Let's will start with Arnav, Nikita, and Purviji, and then Mataji. I feel like it comes into Agam because it's not about you, it's about like the sufferings and all gati, so it's general. Okay, Nikita. I think it's Adhyatma because it's it's directing to you. It will tell you where you will be if you do that. Okay, Rishabh. Like the genre, I think it's like general because it doesn't actually like fall into like action, comedy, drama, fantasy, horror, mystery, or something like that. No, but I'm talking about छह ढाला. Now it is which genre this one is? Uh, so which two genres, like Adhyay or Not Adhyay. Adhyay means chapter. It is, I'm oh not yeah, talking about Adhyay. Adhyatma or Agam. I think it's Adhyatma. Why? I'm not sure. दो ही है, एक गेस करो, राइट? 50% chances to win. Okay. हाँ, पूर्वी जी आप बताओ। I think it falls under Adhyatma because आपने अभी बताया that छह डाला is like a shield. So it's a shield for me. So I think it falls under Adhyatma. ओके, माता जी आप बताओ। ये अध्यात्म में आएगा क्योंकि सुख पाना, आपने कहा अध्यात्म मतलब सुख, जो एटर्नल ब्लिस एंड हैप्पीनेस पाना, जो सुख पाना है वो अपनी ओर जाने के लिए, जो आपने कहा ना कि अध्यात्म में अपनी ओर आना और सुख पाना, यही हमारा एक लक्ष्य है, तो ये अध्यात्म में आएगा, वेरी गुड। मुझे सो ऐसा लगता है। हाँ, तो छह डाला ये अध्यात्म में आएगा क्योंकि इसमें मेरी कहानी है, राइट? अर्नव, you already heard about it, right? Because I'm always telling this is my story. We have passed through all those the gatis and we did all those the suffering, correct? But this is story of what? Story of me. तो अगर मेरी बात आएगी तो किस में आएगा? अध्यात्म। अध्यात्म में। वेरी इजी, वेरी क्लियर। ओके, सो अब किस जिनर का है ये पता चल गया, ये आध्यात्मिक है ये पता चल गया, आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स कैसे होते हैं ये पता चल गया आपको, राइट? सो और कौन कौन से आध्यात्मिक अपने पास स्क्रिप्चर है? जैसे समय सार, प्रवचन सार। ओके,
बट जैसे रत्नाकर श्रावकाचार आएगा तो वो किस में आएगा, वो आगम में आ जाएगा, क्योंकि दैट्स टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर वन। ठीक है। हम्म, समझ में आ रहा है। अष्टपाहुड़, हाँ तो ये अध्यात्म में आएगा। ठीक है। So now you will be, whenever you are reading all those scriptures once, you will definitely know कि कौन सा किस में। उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट तब जाके मिलेगा कि when you have a less time. Right now our life is just 70-80 years maximum, or 100 at fullest, but 100 we cannot utilize this because last 10 years तो ना तो कुछ काम करता है। ठीक है, तो अपना फुलेस्ट यूटिलाइजेशन वाली लाइफ कितनी है, 50-60 years, अप टू 70 years। तो इसका मतलब है कि previously they have a thousands of years in their hand, now our time has very short one. So whenever you have a short time, then what you do, you finish the most important task first, right? But then how you decide this task is most important, and then after, if I'll get an in, then if after that one, if I'm getting any time, I'll go for this the second important task. How you decide it, right? So that's why I already giving you a tool. I'll give you an analysis tool so you can analyze it, and through the on your analysis basis you will decide where I want to invest my time. Okay, it is not only invest here one, that portions is also important, but if I cannot fully concentrate on that time, I'll switch to there, getting more knowledge because it has a generic, but ultimately from that one, now I have an analytical ability. I will, that take those the portions which will be really related to me or impacting it to me. Correct? Okay. So in we will be gradually start learning a method how to interpret it, and that will be purely on analysis base. However, we did this one up. So gradually you will learn. Okay. And if you get in master of that one, then any of those the scripture is easier for you. You never have a doubt. However, I have all this the clarity, the same clarity you always have it. Because now you know, okay, yeah, if I'm watching a horror movie, what I'm going to expect it. Terrifying things, right? Correct? Yeah. So that is the same simple as. तो बच्चा कोई छोटा होगा तो वो बोलेगा कि आपको कैसे पता कि इसमें घोस्ट आएंगे, इसमें ये होगा। अरे भाई थोड़ा सा देखा जिनर, मुझे पता चल गया तो आई नो व्हाट विल बी कमिंग इनटू इट, राइट? सही है ना? And that helps you out because everything in a moksha marg, okay, no one will help you. You need to do your work yourself. Okay, all Panch Parmesti, they may guide you, but they will not help you. You have to do your work your own self. Okay, ना कोई तुम्हें पूरा बना के देगा, कुछ नहीं देगा. Even though they will say, hey, these things, but how you will decide? हमें यहाँ पे सिर्फ डिसीजन ही लेना है. Okay, so this is where we'll be going, but okay, we'll go for very quick overview about the Chhah dhala. So this one is means this Chhah dhala has 6 chapters. Simple as it is. So those are the 6 chapters, and how those the 6 chapters are already been written. So they will Pandit Daulat Ramji, they took the entire format from Buddhijan जी. Okay, so बुद्धिजन जी ने ये फॉर्मेट लिया था, अपनी 6 धारा लिखी थी ना उसमें, तो वहीं से उसने यही फॉर्मेट लिया है. किसने? दौलत राम जी ने. उससे पहले दौलत राम जी से पहले ये 3 दफा लिखी गई थी 6 धारा. एंड दौलत राम जी की जो अभी वी आर राइट नाउ reading this, the 6 dhala is the most famous one.
बुद्धिजन की भी अवेलेबल है, पर इतनी फेमस नहीं है, ताकि लोग इतना नहीं पढ़ते। इफ यू सर्च यू विल हार्डली फाइंड इट, बट यस इट इज स्टिल अवेलेबल। उससे पहले जो लिखी गई थी, दैट इज आई डोंट थिंक सो इट्स अवेलेबल, बट वी हैव दोज आर द रेफरेंसेस की भी, हाँ ये लिखी गई थी। सो दिस वन इज द ओके। और दे हैव उस पे एक हाईली इन्फ्लुएंस रहा है पंडित टोडरमल जी का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसने जो लिखा था। So this one is I'm just giving a brief history about it, कि how those are the influencing things will come. Okay, and then after, so how, and this is a map. You know that like a treasure map, right? So if you follow those the treasure map, everything in a treasure map, if you'll find that the treasure map, how everything will be written into treasure map, very easy way or in a code, कोड। code and symbols. ट्रेजर मैप में कैसा लिखा होगा? सीधा से ऐसा लिखा होगा कि इसके नीचे खजाना है, ऐसा कभी भी लिखा होगा क्या? नहीं। नहीं, राइट। हाँ, उसमें कैसा कोड एंड सिंबल्स में लिखा होता है, एंड यू नीड टू इंटरप्रेट इट। ओके, you need to use your brain, your sight, your analytical power to interpret it. So this is everything is written in a code, and we need to interpret it. But it's a map. How it is a map? I will show you. Okay, so in a chapter first one, uh, the first chapter is talking about the suffering, but actually it's talking about our belief. Okay, so second chapter is talking about the cause of suffering, but actually is talking about our reasons, or otherwise the causes of our own belief. Third chapter, okay, is written about Samyak Darshan Gyan Charitra, but actually it's written about what? About our introduction. ठीक है? Then after chapter 4, so यहाँ पे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस हो गए। So chapter 4 is written about सम्यक चारित्र, देश चारित्र, right? But actually it is a starting point of happiness. आपको थोड़ा सा हैप्पी, आपको टेस्ट किया आपने। ठीक है? So chapter 5 is a bhara bhavna, but it is about the preparation. Now here one you test it, okay, and now you are, because you like it, so अब आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को। किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? कि मैंने जो यहाँ पे टेस्ट किया ना, उसको और ज्यादा टेस्ट ले सकूं। ठीक है, तो ये एक प्रिपरेशन स्टेप है। एंड चैप्टर 6 इज सकल चारित्र, एंड नाउ आपने जो टेस्ट लिया था ना हैप्पीनेस का, उसको अब आप खाने की कोशिश कर रहे हो, खा रहे हो। हम्म, ठीक है, जितना खा रहे हो, ये चैप्टर 6 है। और चैप्टर उसके बाद 7वां चैप्टर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसके बाद का चैप्टर सीधा सा मोक्ष है। तो मोक्ष में क्या होगा? मोक्ष में बस वही वही वही, सुख सुख सुख। अनंत सुख। अनंत सुख, अव्यापात। अब इसमें विदाउट एनी काइंड ऑफ द इंटरप्शंस, आई डोंट वांट एनी इंटरप्शंस। जैसे हम बच्चे को चॉकलेट देते हैं ना, आप उसको थोड़ा सा चॉकलेट टेस्ट कराओ, वापस उसके हाथ में से ले लो, तो वो क्या, दोबारा टेस्ट कराओ, वापस लो, उसके बाद वो क्या करेगा? वो जंप करके आपका हाथ पकड़ेगा और सीधा सा चॉकलेट अपने मुंह में डालेगा, कि नाउ आई डोंट वांट एनी इंटरप्शंस, राइट? अब तो मुझे उसका पूरा टेस्ट ही चाहिए, चाहे वो अपनी उंगलियां वगैरह सब डाल देगा, बट नाउ आई वांट विदाउट एनी इंटरप्शंस। तो अब यहाँ पे आनंद वो चैप्टर 7
यानी कि अब तो जरूरत ही नहीं है. विदाउट एनी इंटरप्शंस दे आर एंजॉयिंग इट. ठीक है. So this one is, I can say, a diagram. It is a path, and it is the same path of the liberations. If we just follow this path, we'll be definitely in a moksha. ओके. तो ये 6 चैप्टर्स के सब्जेक्ट में किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ. Anyway, don't worry about it. If as we go, we learn it again. I'm going pretty slowly, okay, because I want you to understand. If you know what are the reasons, just say I will tell you. Right, Nikita? I'll just tell you one thing, okay? कि लास्ट एग्जाम में आपने चैप्टर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था, इसलिए आप फेल हो चुकी. उस चैप्टर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, ये मैंने आपको बताया. तो इसका मतलब क्या होगा? इफ यू वांट टू गेट a good grade, then what you need to do? Then what you do? Study. Yes, you read that the chapter very well, right? You try to understand it, correct? Because of that the reason, and the last time you not get a good grade. So whenever you know the causes about it, it's easy. Then what you do? जैसे आपको सारे causes पता चल जाएंगे तो आप क्या करोगे? Because Study. of this one, because of this one, because of this one, I am suffering. तो आप क्या करोगे? जितने भी सारे जो causes है ना, उनको ट्राई करोगे कि ये मैं एलिमिनेट करूँ, ये एलिमिनेट करूँ, ये एलिमिनेट करूँ, ये Work. अवॉइड करूँ, right? Because right now you don't know what are the causes, so that's why you still have the suffering is going on. ठीक है? So this one is the most important chapter, and this one is the most analytical one, because then after once you analyze it and then you try to get rid of it, and then you will immediately jump on it, here one, and that is the introductions to yourself. चैप्टर 3 में आके सबको सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा. इजी है, इजी है. इतना हम सोचते हैं ना, इतना टफ नहीं है. पता है, इसलिए मैंने बोला था चैप्टर 1 इज अबाउट योर बिलीफ. ओके, रिमेम्बर. And if you are making those the notes, you are good. And we are going through this the chapter 1, very quick one, and we'll see whatever I told you, it is following it is the same manner or not. And then will be chapter 2, and it is in an advanced level 1. But if you anywhere you will feel any kind of those difficulties, yes, please ask me, because I want everyone get in Samir Darshan in a chapter 3 whenever we reach over there. जो राइटर है ना, उनको भी सम्यक ज्ञान हो गया था, उसके बाद ही तो लिखा है. उससे पहले नहीं लिखा गया है, उसके बाद ही लिखा गया है, और इसके प्रमाण सारे मिलते हैं. ठीक है? सो इसका मतलब है कि ये इसने लिखा है कि जिसने रसगुल्ला की रेसिपी उसी ने लिखी है कि जिसने रसगुल्ला टेस्ट किया है, बनाया भी है और टेस्ट भी किया है. अगर उसने टेस्ट किया है, उसने लिखी है, तो इट वी कंसिडर एज ए ऑथेंटिक वन, राइट? जैसे अर्नव ने तो कभी रसगुल्ला बनाया ही नहीं और वो रेसिपी लिख के देगा, तो नहीं कहता कैन यू मेक रसगुल्ला अकॉर्डिंग टू देयर रेसिपी. निकिता, व्हाट यू डू? जैसे अर्नव ने कभी भी रसगुल्ला टेस्ट ही नहीं किया,
लेकिन उसने तुमको रेसिपी लिख के दे दी, तो आप उसकी रेसिपी से रसगुल्ला बनाओगे क्या? No. नो। हाँ। ओके। तो आप किसको ऑथेंटिक मानोगी, कौन सी रेसिपी को ऑथेंटिक मानोगी? जिसने टेस्ट किया है, राइट? सही है ना? उसको पता है कि उसका टेस्ट कैसा आता है, उसके बाद उसने लिखा है, तो उसकी रेसिपी ऑथेंटिक होती है। ऐसे इसने हमें, आई विल शो यू वेन एवर दैट द पर्टिकुलर पॉइंट कम्स अप देयर, दिस वन इज द बिग इंडिकेटर कि उसको सम्यक ज्ञान हो गया था पहले, उसके बाद ये लिखा गया है। ओके, सो दिस वन इज वी फाइंड आउट द पाथ फ्रॉम इट वन. So with this one, we will be concluding our class. Any question so far, whatever we have learned today? All right. So in the next class, I'll ask you about what is the difference between both one, Agam Adhyatma. Easier because that is an important one. And then after any books you will read it up in a Jain Agam, you will definitely know it will be following under which way. Because second from the second chapter on, we'll be starting interpretations methodology, how to interpret it, right? So how interpret generic one and how interpret that is related with me. Okay. Another questions for you all. However, because during those what we can say during the vacations, we have already started a class for those Jain basics. And with this one, because previously, yeah, Rushabh is there, right, Rushabh? I think you will be joining during those the vacation one. We are doing those the Jain basics, but Nikita and Arnav, this chapter 2, and it is a heavy subject, and I cannot take both of basics as well as this one. Okay, so if you are interested, we'll be splitting this the classes into two. One, a Jain basic will be a separate, or either however this the time permit, I will take an half an hour early and then the 10 minutes more. So that's where the class will be split out into this total 2-1. But if are you interested to learn a Jain basics as well, Nikita and Arnav? Okay. Okay means yes or okay means no? Yes. Yes. How about you, Nikita? Yes. Yes, right? Okay, very good. And Rishabh, yes, correct? Okay, all right. So I'm thinking about it, and then however we'll be deciding, I will put it up that the plan in next class one, and open it for your all suggestions are always been open. You can anytime text me, message me, okay, and we'll be then after this the class will be, this is the same class, but the both subject will be making a separate one. So this one I'll try to put it up in a Chhah dhala basis one, and another one is going towards the basic of Jainisms, all those the basic principles, and that will be help you out to clear all your doubts in your mind. Okay, and once your all doubts are clear, then you can easily see in front of your eyes like and how these the things is purely, and that's how you can change your belief. If your belief is changed, done, you got a samyak darshan. That's it. Okay, so very easy way, very uh, nice way, and hope you everyone get samyak gyan, samyak darshan in this bhav. क्योंकि यहीं पे मोक्ष की टिकट ही कटा लेनी है, उसके बाद तो जाएंगे ही जाएंगे. चारित्र भी सही चाहिए, है, ठीक की है, चारित्र चलिए. भी चाहिए. ऐसा है कि जैसे आप बच्चे को एक छोटा सा चॉकलेट टेस्ट कराते हो ना, ओके, तो उसके बाद उसकी क्रेविंग रहती है कि भाई मुझे चॉकलेट खानी है. तो जैसे हमने एक बार आनंद का टेस्ट किया ना, तो अंदर अपने पास वो क्रेविंग होगी, और वही क्रेविंग हमें चारित्र की ओर लेके जाएगी. फिर वो सिखाना नहीं पड़ेगा,
हम चाहेंगे कि हाँ हमें और मिले। ठीक है। तो चारित्र भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि चारित्र में क्या है पता है? चारित्र सिंपल है कि यहाँ पे आपने एक ड्रॉप टेस्ट किया है। चारित्र में तो आप थोड़ी सी और ज्यादा यू आर इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी टू टेस्टिंग इट, टू एंजॉइंग इट, ओके, एक्सपीरियंसिंग इट। आप अपनी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हो चारित्र में, और चारित्र की पूर्णता में आपने फुल कैपेसिटी डेवलप कर ली। अब तो जितना है आ जाओ, एक साथ लूंगा ऐसा। ओके चलिए। सो विथ नमोकार महामंत्र, everyone please join your hand together. नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोवे सवसाहुणम्। ऐसो पंचणमुकारो सौव पावपणासनो, मंगलाणञ्च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम्। And just the homework for you all, at least read ढाल 1, ओके, फॉर द नेक्स्ट पीरियड। आप एक बार पढ़ लेना पूरी की पूरी ढाल 1, all those the stanzas, just read it, okay? Don't worry if you do not understand, no worries, but at least read one time. ठीक है? So that is just the homework. All right, so see you in the next class, and sorry 10 मिनट ज्यादा हो गए। हाँ, okay. But I try to cover the class in timely manner, but ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र, see you next week। जय जिनेन्द्र। Jai Shinendra. जय जिनेन्द्र।